हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की थी कि व्हाट आर द मार्जिन्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड इफ एट ऑल यू वांट टू ट्रेड. मैंने एक स्टडी completed. So let's guys, any doubts from yesterday? How I take trades, or actually what are the indicators that I use? Uh, guys, just give me a minute, right? मैं PDF open कर रहा हूँ. So when you actually start trading in crude, you actually should know what are the dates of the expiry, right? So um, in crude there are basically two type of commodities, that is crude oil and crude oil mini, right? And the number of commodities per year is actually Jan. एक minute. Uh, so this 6 months meant कि एक time पे आप type of this one thing. Day is 2 business days prior to the expiry crude January futures is 5918. So मैंने उसके हिसाब से एक too high in comparison uh, to what the premiums will be in the current month. So like how I trade is basically पहले तो हम लोग अपना support और resistance mark करेंगे. So if you see एक long term में crude यहाँ पर आया है तो यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से आया है तो यहाँ से ऊपर गया है, और फिर जब यहाँ से नीचे आया है तो फिर वो बार बार यहाँ पर पहले जो सपोर्ट था वो उसको रेजिस्टेंस बना रहा है. यू गाइज माइट बी नोइंग हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स इन इक्विटीज. एग्जैक्टली वैसे ही हमको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है. सो this is one resistance that we have that I have marked as of now. थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में जाएंगे हम. सो इफ यू सी यहाँ पर इस रेंज में बार बार आकर के वो सपोर्ट लेता है और ऊपर जा रहा है, सो विल मार्केट यहाँ इस रेंज में भी वो कई बार यहाँ पर तो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर वो इस रेंज में यहाँ पर आकर के ऊपर जा रहा था, यहाँ पर भी वो आया ऊपर गया, यहाँ पर भी आया ऊपर गया, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया बेस्ड ऑन द करंट प्राइस. देन दिस कुड बी वन रेजिस्टेंस, वो थोड़ा लंबा है. एंड so ऑलमोस्ट अराउंड हियर इज नेक्स्ट सपोर्ट अगर थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में देखेंगे, राइट? एनीबडी इज लुकिंग एट दिस येलो लाइन ओवर हियर? सबको दिख रहा है या सिर्फ मेरे को एक ये येलो लाइन जैसा दिख रहा है? हाउ कम लाइक एनीबडी इज एबल टू टाइप माय स्क्रीन? एम आई ऑडिबल? एंड दे डू मैंने जैसे हेजिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया था. इफ दे वांट टू generally prefer to trade in a 15 minutes time frame. And so description is it's a technical indicator that to what you see in as in the RSI indicator. Like so Google Pay, the description is it's a technical indicator that measures the difference between the current price and historical average price. तो historical जो भी average price है उसके हिसाब से वो एक weightage निकालता है, like and then it actually uh, draws a line as similar to what you see in as in the RSI indicator, right?
सो दिस इज लाइक अ वेटेज कमोडिटी अगर ऊपर जा रहा है द डिस्क्रिप्शन व्हाट इज सीसीआई जस्ट नाउ आई हैव द सपोर्ट आई हैव द रेजिस्टेंस तो मैं कुछ इंडिकेटर्स का हेल्प लेता हूँ लाइक द फर्स्ट इंडिकेटर दैट आई यूज इज CCI is the commodity channel index. What is CCI? Just give me it. It's a technical indicator that measures the difference between the and then it actually मैं ये लेंथ को 34 कर दूंगा राइट सो लास्ट 34 डेज का वो लास्ट एक मंथ का वो एवरेज निकालेगा एंड एक्चुअली इट विल प्लॉट अकॉर्डिंगली तो वो लाइन थोड़ा इट विल चेंज राइट सो लास्ट 1 मंथ का एवरेज से मैंने दिस इज द CCI कमोडिटीज में बेसिकली RSI is one of the major factors on how you trade like मेरा जो सेटअप है उसमें RSI में बहुत अच्छे से वर्क करता है आई ट्राई टू लाइक RSI बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड आई ट्राई टू यूज द RSI फॉर ऑल माय ट्रेड्स राइट सो आई ट्राई टू वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑन हाउ यू ट्रेड लाइक मेरा जो सेटअप है उसमें RSI में बहुत अच्छे से वर्क करता है आई ट्राई टू लाइक RSI बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड आई ट्राई टू यूज द RSI फॉर ऑल माय ट्रेड्स राइट सो एवरीथिंग विल बी डिफॉल्ट नंबर्स में कुछ चेंज नहीं होगा खाली रेगुलर बुलिश ये लेबल्स में निकाल दूंगा आई रिमूव द मूविंग एवरेज एज वेल ठीक दिस इज द RSI and this is the middle line which is 50 so 70 is my oversold position 30 is the uh, sorry uh, 30 below 30 is the overbought and oversold and uh, uh, like default one I am not changing मैंने खाली ये labels निकाला like RSI base MA निकाला और ये लेबल्स निकाला सो दैट वो जो यहाँ पर बीच में कोई इंडिकेटर या डॉट ये सब आते हैं वो आई डोंट वांट दैट एटलीस्ट इन माय ट्रेडिंग राइट RSI do you able to determine and RSI is basically you determine if you like 100 yeah the values for RSI is 100 and -100 right तो जब भी 100 से रहता है तो जब प्राइस नीचे आता है वो धीरे धीरे करके -100 भी आता है राइट सपोज मैंने यहाँ पर बाई किया होता बेसिस ऑन दिस राइट इस कैंडल पे मैंने बाई किया होता तो वो 100 कहाँ पर गया यहाँ पर पहुंचा राइट तो बेसिकली कर करके ऊपर ही गया राइट इसमें बहुत सारे इफ्स एंड CCI वर्क कर कैसे वर्क करता है तो आप जब भी देखोगे ऑन एनी टाइम फ्रेम लाइक इवन इन आर्ली टाइम फ्रेम ठीक है आर्ली टाइम फ्रेम आप जब भी देखोगे CCI अगर आता है तो वो ऊपर तो जाता ही हाँ जब भी रिवर्स हो गया तो रिवर्स किस तरह से फॉलो करना चाहिए आपको वो मैं आगे बताऊंगा आई जस्ट रिमूव ये मूव नो व्हाट इफ्स एंड बट्स है वो सपोर्ट कहाँ लेता है कब लेता है विल विल लुक इनटू दैट ठीक है आई जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ so we'll plot two indicators over here more
Now what I'll plot is mm, moving average, simple moving average, and the other I'll plot is the EMA. For SMA, I'll remove the smoothing line. The length of the EMA would be sorry, simple moving average would be 200. I'll remove each. कल कोई पूछ रहा था राइट वाज व्हाट्स दैट क्रॉस लाइन, तो मैं लाइन की जगह पे आई यूज द क्रॉस. तो बेसिकली वो जल्दी से समझ में आ जाता है मुझे कि दैट इज, इवन इफ आई डू नॉट चेंज द कलर्स एंड ऑल, वो मुझे समझ में आ जाता है कि दिस इज माय SMA लाइन. तो दिस इज SMA 200 एंड EMA का है व्हाट आई प्लॉट इज EMA 50, राइट. व्हाट इट इज. तो वो जब भी प्राइस ऊपर से SMA 200 को कट करती है, जब जब भी प्राइस SMA 200 को कट करती है, तो वी एक्चुअली विल वेट, वी डू नॉट एक्चुअली गो डायरेक्टली और हम लोग सेल या पी बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं. वेन एवर जब भी प्राइस ऊपर से कनेक्ट कट करती है, तो यू विल हैव टू वेट. सी लाइक गाइस, कमोडिटीज में यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि प्राइस एक बार आता है तो ऊपर आता ही है, और फिर नीचे जाएगा तो फिर वो एक यूनिडायरेक्शनल जाता है. सो वेन एवर if the EMA line is below the SMA line, तो what the prices will do is, वो है ना EMA लाइन पे सपोर्ट. बेसिकली द थिंग इज दैट कि बहुत सारे concepts है available in the market, but most of the traders that they use the SMA and the EMA to while trading in commodities. तो आप देखोगे ना, अगर यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, देख इसने SMA को काटा, ऊपर से नीचे प्राइस आया, and then it again went up, but again it came down, and फिर उसने EMA को भी तोड़ा. सो यहाँ पर जब तोड़ा तो उसने EMA पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, EMA 50 पर जब वो EMA 50 तोड़ करके भी नीचे आया, देन एक्चुअली यू गॉट फ्रॉम 60338 से यहाँ से लेके यू गॉट अराउंड 60-70 पॉइंट्स, राइट, कमोडिटीज में इन क्रूड. लेकिन उसका भी कंडीशन है, वेन एवर यू टेक अ ट्रेड, जब भी SMA का सपोर्ट लेके वो तोड़ के नीचे आता है, दिस वो यू शुड सी कि वो CCI भी वो नीचे की तरफ आ रहा हो, लाइक इट शुड बी लेस लेस देन 100. अगर यहाँ ऊपर रहेगा, सपोज आप देखोगे, इवन इफ द CCI इज कमिंग डाउन, यहाँ इस कैंडल पे हो फॉर इंस्टेंस, बट वो एक्चुअली डाइवर्जन नहीं रहता है. सो whenever you have to take a sell side trade, वो EMA और 50, EMA 50 और SMA 200 के नीचे रहना चाहिए. देन यू हैव टू वेट कि वो RSI लाइन पे क्या कर रहे हैं, राइट. सी लाइक यहाँ पर आप सी दिस कैंडल यहाँ पर आया, वो आया यहाँ पर, नीचे आया लेकिन वो ऊपर जाके उसने RSI 50 पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया. मतलब वहां पर RSI 50 was actually acting as a resistance. That is the reason commodity में RSI भी is becomes very crucial when actually you are doing a trade. Which part do you want me to repeat, Partha? So like whenever I want to buy
the CCI should be showing a downward direction when I enter the trade, and you'll see, or it will try to take a support near the EMA line. It's moving upside. तो अगर मैं बाय यहाँ नहीं करता तो आई कैन कुड हैव बॉट ओवर, ने यहाँ पर आया, उसने ट्राई किया 50 के आसपास आकर उसने सपोर्ट लेके फिर वो वापस ऊपर की तरफ गया। एंड नॉर्मली कमोडिटीज में आप देखोगे मूव्स आर यूनिडायरेक्शनल, आपको खाली थोड़ा पेशेंस रखना है और आपको टाइमली एंट्री करना है, राइट। सो दिस इज द करंट स्टेटस, राइट। अभी आप देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, द सीसीआई इज गोइंग अप। तो मैंने बोला जब यहाँ पर कि आप ले लो जाकर, आ, मतलब नॉर्मली यहाँ से वो 100 पे जाएगा ही जाएगा। इट डज नॉट मीन कि आप यहाँ पर डायरेक्टली टर्न हुआ तो आप डायरेक्टली बाय कर लोगे, नहीं। जब ये यहाँ पर जाएगा तो यू हैव टू वेट कि वो ईएमए पे क्या कर रहा है। अगर ईएमए पे, ईएमए और एसएमए में डिफरेंस है तो मैं जाके यहाँ पे बाय कर दूंगा, एंड आई कुड वेट फॉर रेजिस्टेंस एंड ईएमए 50 कोशिश करता है, देन वी somewhere near this zone, and then we can wait for the, showed you the PDF, what it said would be, Daniel, yes, okay. Now this is how, यहाँ पर SMA को कट करके आया लाइन, राइट। So the RSI is already near 30. So at this point I will not take a trade. RSI यहाँ पर वापस आया. It's taking again a resistance at the SMA 200 line, right? It's again taking a resistance again 200 line. Trade at 6041. I could have booked more than 100 points in. RSI should be near about 50 levels के आसपास होना चाहिए. If I have to buy, it should be above 50. If I have to sell, it should be below 50. And if you see, like आप लोग बैक टेस्ट करोगे ये strategy, you normally see like RSI, RSI is also EMA के पास मैं ट्रेड ले लूंगा with near about this price as my stop loss, and I'll take a trade. I'll take a trade like for 70, 80 points, whatever, and I could have easily got around. Natural gas is also the same way. Would be below uh, SMA. See, EMA might be ऊपर नीचे हो सकता है, बट SMA के बेस पे हम ज्यादा पोजीशंस लेते हैं। तो SMA लाइक इफ इसकी नेचुरल गैस का एक लॉट इज 1250 क्वांटिटी, तो अगर मैंने 2 रुपए भी कैप्चर किए एक लॉट में, इट इज 2500 रुपीज, राइट। सो दिस इज 3 रुपीज इज एक्चुअली अ बिग मूवमेंट, बिकॉज क्या यूज किया है हमने, CCI is available, RSI, CCI is commodity channel index, अगर that is available, RSI is also available, ADX should be available, TI, but I only follow ADX. मेरे setup में I only follow ADX. Now when the ADX, the movement is very good, and uh, above 50, right? So hardly the ADX will, right? But for now, मैंने ये 23 पे I have drawn a line. So my condition is 20 तक when my ADX
ये जो मैंने कंडीशन जो पहले के बताए हैं, इट डज फुलफिल, और उसके बाद मेरा रहा हूँ, बट ट्रेड विल always be in 15 minutes. The time frame will only always be 15 minutes. Just give me a minute, guys. So this is how actually I try to take my trade. So this was for natural gas and crude. So I don't think हमको uh, we would require that much trade. I'll wait. अभी कोई trade दिख नहीं रहा है मुझको. If at all I see a trade, we surely can. Hope I answered. Is actually very big movement, so you have to be very careful. तो वो setup मैं कल बता दूंगा in options for crude and natural gas, because today at least you will not require strategies. हाँ, अगर आप if you want to carry forward the positions like